तो दोस्तों, आज का जो दिन है ये काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं। वो मेडिकल फील्ड बोलो, और इस फील्ड में वो एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। तो दोस्तों, ऐसे इंसान को सुनने का हमें मौका मिला है, जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर बिजॉय देव। और डॉक्टर बिजॉय देव, उनकी क्वालिफिकेशन बोलूं, सो हिज बीएससी बायो, एमडी इंटीग्रेटिव मेडिसिन, डीएनपी सीएफएन, सीसीजीपी लंदन, सर्टिफाइड इन इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल किया है, आज मेडिकल साइंस में न्यूट्रास्यूटिकल बोलो, फार्मास्यूटिकल्स बोलो, जितने भी वो इंडिया के बड़े बड़े लैब हैं, उन लैब में एज ए डायरेक्टर, एज ए कंसल्टेंट, उनके द्वारा फॉर्मुलेशन डिजाइन होता है और उनके द्वारा डॉक्यूमेंटेड काफी सारे रिसर्च वर्क है। जैसे कि दोस्तों, पॉन्टिका लैब के वो डायरेक्टर हैं, पुनीत लैब के वो खुद डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ तिरुपति लाइफ साइंस में वो चीफ मेडिकल ऑफिसर है। सो उनके द्वारा कंटिन्यूअसली जो रिसर्च वर्क चल रहा है, और जिनका बेनिफिट्स हम एनएचएमपीएल लोगों को जो ये बेनिफिट मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आगे जो भी आएंगे, उस प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका फॉर्मुलेशन, उसका मार्केटिंग, वो सब एक रास्ता हमें वो दिखाएंगे कि हमें किस रास्ते में चलना है, और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को से लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। और ये इमीडिएट रिजल्ट, जो मार्केट का डिमांड है, जो आज प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं अपने हेल्थ वाइज, ये परमानेंट सॉल्यूशंस किस तरह से वो लोग लेंगे एनएचए प्रोडक्ट के द्वारा। तो आज दोस्तों, हम सब लोग काफी एक्साइटेड है, इंक्लूड मी, एनएचएमपीएल के पूरा मैनेजमेंट, और साथ ही साथ जितने भी कोर लीडर है, ये सभी लोग काफी एक्साइटेड है। हम सुनेंगे, तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विजय देव को, उन्हें इनवाइट करता हूं। और इनवाइट करने के लिए आप सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम लिखेंगे। आप सभी लोग चैट बॉक्स में सर को आने के लिए, देखिए आज इतने बड़े दिग्गज शख्स हमारे बीच शामिल हो रहे हैं। आगे से रिक्वेस्ट करता हूं सर, आर यू देयर सर? Welcome all of you for attending this particular session. This session में what I will do, then I will give you the medical aspects and simultaneously we'll talk about our products. Because today we'll go for the liver preparations, and second one is that your flaxseed oil, that is omega-3 fatty acid. Sir, एक रिक्वेस्ट है सर, आई एम डिस्टर्बिंग यू सर, इफ यू कैन ओपन योर वीडियो सो दैट everyone can see your face live, so that it can create an impact. Yes sir, now I am highlighting you sir. Just a minute, I'm just highlighting, spotlighting you. Yes, now it's okay sir, thank you very much sir. Yes. Yeah. That's why I'm telling that we'll take into consideration the formulations in such a manner, because there are a lot of things are involved when we are talking about that this particular formulation is effective, particularly for taking care of your cardiac health. Then obviously we should know that little bit about the heart. How many chambers are there, heart, and what are the layers are there? What are the complications generally occur? In general, I will not go in depth, because if I go in depth, then it will be a little bit difficult. But I will try my best to explain you in such a manner that you understand. Suppose when we say that chronic heart disease. Chronic heart disease kya hai? When I'm telling that yes, flaxseed oil, it is very effective for taking care of your chronic heart disease. How does it help in case of your chronic heart disease? Even also when we'll go for liver preparations, we'll talk about the NFLD, non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver disease. ये सारे चीज मैं very simpler manner हम explain करेंगे. Here, those who are listening, everybody will not be able to ask question, because there are a lot of people have joined. Near about 133 people have joined, so individual question and answer will not be possible. But in case of leader, if anybody would like to ask question, raise your hand and then you can ask. But
we'll go for one by one medical aspects, and then after that we'll go for the product. So see, when we are talking about the liver preparation, जब हम लोग ये liver preparations का बारे में बात करेंगे, obviously we should know that what is liver and what is the weight of this liver and where it is formed. So liver basically ये हम लोगों का शरीर का सबसे largest organ है. इसका weight जो है वो 1.5 kg है. It is a dark in color, and generally it is found in the upper part of the abdomen on the right side, okay, in our body. Now this is the most important part we have to understand. All of you have heard about this pancreas. You can see here, this is a leaf like structure. ये जो पत्ते का माफिक जो structure है, we call it pancreas. And you can see this liver. Liver has basically two parts, right and left, right lobe and left lobe. And from this, your liver, you will find two duct is coming out from the right lobe and the left lobe. These two ducts are known as left hepatic duct and right hepatic duct. ये दोनों hepatic duct, they join together and form common hepatic duct. And ये जो लीवर है, लीवर का नीचे एक small sac-like structure है. This small sac-like structure is known as gallbladder. Okay. From ये gallbladder आप लोगों ने ये नाम सुने हो, that a gallbladder से एक duct नीचे आ रहा है, एक नाली नीचे आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ये cystic duct. ये cystic duct and your common hepatic duct, they join together and form common bile duct, and that it opens into the first part of the small intestine, that is your duodenum. So from liver, anything, it is coming to your small intestine through basically this common bile duct. And you will find that from pancreas, there is another duct is coming that is known as pancreatic duct. They join together and they opens into the first part of the small intestine, that is your duodenum. Okay. Why I have talked about this structure? Because this structure will help you to understand a lot of things. When we'll talk about the actions of different ingredients, then it will be easier for you. Now, all of us know that what is the function of liver. We know that basically ये filtration of blood के लिए ये help करते हैं. Second one is that it also secretes a bile. Now, this bile is a substance which contains three major components. One is bile acid, and second one is bile pigment, and the bile salt. And you will find that जो खाना हम लोग खा रहा है, that is carbohydrate, protein, fat, ये डाइजेस्ट होने का बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड इट गोज टू ब्लड, through blood circulation it comes to your cell and tissue, and mainly it goes to your liver, and there you will find the metabolism, further breakdown. Metabolism का मतलब है further breakdown of carbohydrate and protein generally takes place, and you will find that hormone and all of vitamins, iron, you will find in the storage organ of our body, this liver. And you will find that it also helps in formation of coagulating factor. Now here आपको समझ में आना चाहिए, हम लोगों का बॉडी में there are four proteins है जो basically one is serum albumin, second one is serum globulin, and then fibrinogen and prothrombin. Basically the clotting factor are two, that is एक तो है आपका thrombin and another one is fibrinogen. Clotting factor का मतलब क्या है? That basically helps in coagulation of blood. Coagulation of blood का मतलब क्या है? Blood को coagulate means that means your formation of your thrombus or your this things that when it becomes clotted, then the bleeding can be stopped. Suppose when there is a cut, then there is a bleeding. We see that all of a sudden that bleeding has been stopped. Why bleeding has been stopped? Because
हम लोगों का जो ब्लड है, ब्लड में दो क्लॉटिंग फैक्टर है, एक है प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजेन। ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर बेसिकली प्रोड्यूस कहां पर होता है? आपका लीवर में। सो another thing is that whatever drugs we are taking or whatever the supplements we are taking and the hormones and other substances, it basically removed from the liver. Now, if my liver is functioning properly, मेरा liver ठीक से काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन liver ठीक से काम नहीं कर रहा है, then there will be a lot of problems. What are the problems may occur if the liver is not functioning in a proper manner? So you have seen that liver has a lot of functions. So that's why we call it liver a chemical factory. ये एक chemical factory है. If this particular liver does not function, जो हम लोगों का शरीर का waste product है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, और लीवर ठीक से काम नहीं करेंगे, तो that cannot be excreted from our body. So there is a chance of toxicity. Second, a most important point is that you will find that there is no proper filtrations, and even also that vitamins and iron, if it is not being stored in the liver in a proper manner, then a lot of complications may arise. Now coming to the most important part, that when the liver is not functioning properly, we have heard that there is a disease called jaundice. But this jaundice kya hai? You will find that if you see the eyes, that eyes, the white part जो है हम लोगों का eyes का, we call it sclera. ये part देखिए yellowish हो गया. Generally, normally it will be white in color, but here you can see that it has become yellowish in color. Why it has become yellowish in color, that I will come to later on. And if you see the face, this is the left side is the normal face color, and right side we have shown that it is little bit tinted yellowish. So that is because if this is the situation, even आपका जो palm है, palm आपका yellowish हो गया, nails आपका yellowish हो गया, urine yellowish हो गया, yellow in color, healthy हो रहा है, जैसा लग रहा है, then we can say that the person is suffering from jaundice. Now, ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? जॉन्डिस का कारण क्या है? नाउ देखिए, हम लोगों का ब्लड में 3 ब्लड सेल्स है. एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट. आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट और thrombocyte we call it. Now generally this your RBC, it has a lifespan of 125 days. Generally, after 125 days, this RBC will be destroyed, and it will convert into biliverdin initially, then ultimately converts into bilirubin. Now, this is the normal. Somebody has raised a hand. Sir, now please carry on. After the session, we will take the question, sir. Okay, take it. Okay. Now, the thing is that your biliverdin, it converts into bilirubin. So bilirubin, it is yellow in color. इसका जो color है वो yellowish color है. Generally, normally, if my RBC, if it is broken down after 120 days, this bilirubin will not increase. It will be in the normal level. So आपको अभी जानना जरूरी है, what is the normal level of bilirubin? Normal level of bilirubin 0.5 milligram per deciliter. This is the normal level. Okay. When it becomes 3 times, that means 1.5 milligram per deciliter, we can say that bilirubin level has been increased, and we call it that the person is suffering from jaundice. Now, why it has been increased? Because my RBC is being destroyed prior to 120 days. That means generally it should be destroyed after 120 days, but the RBC, it has been destroyed prior to 120 days. Maybe after 80 days, it has been destroyed.
So what will happen? There will be a more formation of biliverdin, and that ultimately leads to your bilirubin. So your bilirubin concentration is increasing. Now it becomes 3 times, then I'm suffering from your jaundice. But this is the free bilirubin. There is another bilirubin that is called conjugated bilirubin. So when we go for test, you will find that in the uh, report, you will find bilirubin. It has been divided into your two aspects, your conjugated bilirubin and unconjugated bilirubin. So unconjugated bilirubin, that is called free bilirubin, which basically is produced from the RBC. Now, this bilirubin, after that, it goes to your liver. Liver, it binds with the protein and form conjugated bilirubin. Now, what we have found that this bilirubin, when we are talking about, there are two parts. One is conjugated bilirubin, another one is unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin is nothing but a free bilirubin, which is produced from the RBC because of the destruction of RBC. RBC का destruction होने से वहां से bilirubin formations हो रहा है, लेकिन normally 120 days में इसका डिस्ट्रक्शन होंगे तो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज नहीं होगा. हम लोग will not suffer from jaundice to that extent. Number one. Number two is that if we have an excess destruction of your RBC, then bilirubin level goes up and we suffer from jaundice. And here you will find that free bilirubin has been increased. Now coming to the next part. Next part, you will I have shown over here that normal level is 0.5 milligram per deciliter, but when it becomes 1.5 milligram per deciliter, that means 3 times of your 0.5 milligram per deciliter, then we can say that I'm suffering from jaundice. Now, one is that we have seen that there is an excessive destruction of your RBC. Because of that, the bilirubin level, it has been increased. That means unconjugated bilirubin has been increased. So free bilirubin has been increased. These conditions, we call it hemolytic jaundice. So you have heard the doctor ने बोला आपका hemolytic jaundice हुआ. तो hemolytic jaundice का मतलब क्या है? जो आपका RBC है, जनरली वो 120 डेज में उसका डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन 120 डेज का पहले ही हो गया, सो ज्यादा बिलिरुबिन फॉर्मेशंस होगा, वो बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे. So if body is unable to excrete this excess bilirubin, then it accumulates in our body and our bilirubin level goes off from 0.5 milligram to 1.5 milligram and we suffer from jaundice, and this jaundice is known as your hemolytic jaundice. There is another jaundice is there. My destruction of RBC is absolutely okay. It is 120 days. Bilirubin is normal level, that is your free bilirubin within the range of 0.5 milligram per deciliter. But I have a obstruction in the bile duct, or I have a hepatic cell damage. Because I have told you that bilirubin, which is produced in the blood, it goes to your liver, it binds with protein and form conjugated bilirubin. So this conjugated bilirubin, generally I have shown you that hepatic duct, then common hepatic duct, then you will find cystic duct. It has joined with your common hepatic duct and form bile duct. It comes to your small intestine. Now, suppose in case of bile duct has been constricted, तो चिपक गया. So what will happen? This conjugated bilirubin will not be able to come to your small intestine. जो आपका बिलिरुबिन प्रोटीन का साथ बाइंड करके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हुआ, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएंगे. ओके, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. अनदर वन इज दैट आपका बाइल डक्ट का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, बाइल डक्ट का अंदर में ट्यूमर है. ट्यूमर होने से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. इवन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैनॉट कम टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी नहीं हुआ, आपका ये जो बाइल डक्ट है वहां पर स्टोन है, स्टोन के लिए आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. सो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन,
this conjugated bilirubin, it will go back to your blood, and your conjugated bilirubin goes up, and we suffer from jaundice. This sort of jaundice, we call it your obstructive jaundice. मे बी मेरा बाइल डक्ट में कोई स्टोन भी नहीं है, ट्यूमर भी नहीं है, मेरा बाइल डक्ट भी चिपक नहीं गया, हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, स्टिल my conjugated bilirubin is increasing. Why? Because my hepatic cell, माने लीवर सेल का डैमेज हो रहा है. क्यों डैमेज हो रहा है? मैं ज्यादा अल्कोहल पी रहा हूं, इसीलिए डैमेज हो सकते हैं. मैं कुछ ड्रग ले रहा हूं जो लीवर सेल को डैमेज कर सकते हैं. And maybe I have a viral infections, that is hepatitis B or hepatitis C or hepatitis A, and because of that मेरा liver cell damage हो रहा है. So liver cell damage होगा तो ये conjugated bilirubin, it will leaks out from your liver cells and it goes to your blood, and automatically conjugated bilirubin will increase. So जब डॉक्टर आपको देखेंगे जो conjugated bilirubin increase हो रहा है, देन डॉक्टर बोलेंगे आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है. लेकिन आपका जब फ्री बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है, देन डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका हिमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ. नाउ कमिंग टू दैट, दिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, द पॉजिटिव फैक्टर इज टू. वन इज हेपेटिक सेल डैमेज, another one is that if there is a obstruction in the bile duct because of tumor, because of constriction, or because of stone formations. So that's why this obstructive jaundice, we call it intra and extrahepatic. If it is found that the obstructive jaundice because of the obstruction in the bile duct, then it is an extrahepatic obstruction, obstructive jaundice. If there is a damage of the hepatic cell and because of that your conjugated bilirubin, it has been increased, then it is an intra-obstructive jaundice. And in particularly, if you see that we have an enlargement of liver, we generally हम लोग बोलते हैं sluggish liver. इसका कारण क्या है? मेरा लीवर में फैट जमा हो रहा है. लीवर में कैसे फैट जमा होगा? लीवर में फैट जमा होगा तब जब हम बहुत सारे फैटी सब्सटेंस खा रहे हैं. हम घी, मक्खन, बटर, oil, excessive oil, so there will be an accumulation of your fat in the liver. These sort of conditions, we call it non-alcoholic fatty liver disease. We call it non-alcoholic fatty liver disease, means I have not taken alcohol, but I am suffering from fatty liver. That is because of excess consumption of your butter, ghee, or maybe oil. That's why there is a fat accumulations in the liver. That is your non-alcoholic fatty liver disease. Yes, I'm not taking too much oil or fat, but I'm taking alcohol on a regular basis. So that will create another problem. We call it alcoholic fatty liver disease. और ये जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में क्या होता है, इनिशियली तो आपका लीवर एनलार्ज होगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा. बाद में this liver cell start damage. Why? When there will be an excess accumulation of fat in the liver. So ये जो liver cell damage होना शुरू होगा, then it is known as fibrosis of the liver. Now ये fibrosis, it will convert into cirrhosis. That means when this damaged liver cells further multiplied, and it leads to your cirrhosis of liver. And this cirrhosis of liver, if it is not being taken care of, then क्या होगा? जो हम लोग बोलते हैं liver cancer और hepatocellular carcinoma. देखिए, only because of your sluggish liver or your fatty liver, a person may suffer from hepatocellular carcinoma. We take in a very easy manner. बहुत हम लोग बोलते हैं थोड़ा लीवर एनलार्ज हुआ, क्या है? लेकिन ये लीवर जब एनलार्ज हुआ, क्यों एनलार्ज हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर. ये फैट जमा होते होते जब ज्यादा हो जाएंगे तब लीवर सेल डैमेज होगा, एंड दिस लीवर सेल डैमेज होने से आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा व लीवर कैंसर भी हो सकते हैं. एंड व्हाई इन इंडिया the chances of
this liver disorder is more, because we are in very unhygienic living conditions. Because 60% आदमी तो poverty line का नीचे है. So they are lead a very unhygienic lifestyle. This is one of the reasons. And you will find that लीवर का जो डैमेज हो रहा है, इसमें तो एक वायरस है. Virus can damage the liver cells. And another is the amoebiasis. That means Entamoeba histolytica. This is a bacteria which causes amoebiasis. Amoebiasis का मतलब है कि आप देखोगे जब आप defecations और टट्टी करने जा रहे हो, जो स्टूल निकाल रहा है वो थोड़ा सा काफ का माफिक है, काफ जैसा है, ऐसा है, then we call it that you are suffering from amoebiasis. And excessive alcohol consumption भी आपका a major factor for liver disorder. Okay. And even sometimes for treating certain disease, we take certain drugs. Suppose मेरा malaria हुआ, मुझे anti-malarial drugs लेना पड़ेगा. So anti-malarial drugs are hepatotoxic. That means it damages the liver cells. Anti-malarial drug छोड़ के मेरा TB हुआ, tuberculosis. So मुझे तो anti-tubercular drug लेना ही पड़ेगा. लेकिन I'm taking care of my TB, but it also may damage the liver cells because those drugs are very, very hepatotoxic. Paracetamol. मेरा बुकर हुआ, मेरा fever है, मैं paracetamol ले रहा हूँ, and unnecessary sometimes we take paracetamol. थोड़ा headache हुआ, paracetamol ले लिया. But if I do like that, then it also may damage my liver cells. And there are certain non-steroidal anti-inflammatory drugs, for example, indomethacin, that is also responsible. And excess your fat consumption, that is your butter, ghee, all those things are also responsible for the same. How we can understand my liver is absolutely healthy or not? There is a very easy way we can understand that we do the liver function test. ये liver function test क्या होता है? Liver function test basically we check certain parameters. Bilirubin level क्या है? It is within the normal level or not. Second one, हम लोग देखते हैं two enzymes. They are the liver enzyme. One is SGOT, another one is SGPT. These two liver enzyme, it is found in the liver cells. If there is a liver cell damage, then these enzymes will leak out and it goes into the bloodstream. And your SGOT, SGPT level goes up. When SGOT, SGPT level goes up, then we can say that my hepatic cell damage start हो गया. That means मेरा liver cell damage हो रहा है. क्यों हो रहा है? उसका भी आपका पास कारण है. आप excess alcohol ले रहे हो, excess fat consumption कर रहे हो. Maybe आप some drug ले रहे हो. That also is responsible for that. Even also you are in a very unhygienic conditions. But ये LFT हम लोग नहीं कर पाते हैं. Most of the people, because it's very expensive. At least 650 rupees is required. So we don't know that what is happening in our body. हम लोगों का SGOT, SGPT level increase हो रहा है कि नहीं, bilirubin level increase हुआ कि नहीं, और एक चीजें हैं जो alkaline phosphatase वो increase हो रहा है कि नहीं, हम लोगों का मालूम नहीं है because we don't do the liver function test. Generally, at least yearly एक बार liver function test करना चाहिए. Because of this particular test is very expensive, we don't do that. Now, what we require then? We require a hepatoprotective and hepatoregenerating drugs. I have to take supplement. I have to take certain supplements which will protect my liver from the toxins, from the drugs, from the alcohol. It will protect. Okay. Second one is that मेरा liver cell damage हुआ. Liver का एक plus point है. यहाँ पर जो cell है उसका regeneration is possible. We can regenerate liver cells. Okay, so if we take healthy diet and all those things and supplement, we can regenerate your hepatic cell or liver cells. So that's why we call it hepatoregenerative. So मेरा जो formulations होगा, जो supplement होगा, उसमें hepatoprotective component होना चाहिए, जो मेरा liver को protect करेंगे toxin, drugs, alcohol से और excessive fat से. Number one.
Second one is that there should be a hepatoregenerative supplement. That means which will, whatever liver cell has been damaged, I can regenerate new liver cells. Okay. Second most important point is that I have to improve the bile secretion. If I can improve the bile secretion, also it will help a lot. And we have to avoid that your anti-malarial, anti-tubercular drug, and it has to be taken within the short period of time. So we should not, we have to check that we should not suffer from malaria. We should put the mosquito net in a proper manner. And second one, we should take healthy food so that we should not suffer from tuberculosis, because these are the drugs basically responsible for hepatic cell damage, liver cell को damage कर सकते हैं. और एक चीज तो हम लोगों का हाथ में है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं, क्या? Alcohol consumption. We start with 1 pack and then after that we continue, sometimes 6 packs, 7 pack, and that makes our liver cell damage. And basically we are inviting all those problems. So that I have told that these are the liver function tests. We can do that. You can see that this is the condition of the liver. Already hepatitis, your viral hepatitis is there. And then there is already fibrosis. When a cell damage, it has started. Here you can see the cirrhosis, that जो cell damage हो गया, वो further multiply करके ऐसा conditions हुआ. And that cirrhosis, it leads to your hepatocellular carcinoma or your liver cancer. And ultimately, in case of your cancer patient, if you see the liver conditions, it will be like that. So liver function test can tell us that our liver is healthy or not. But liver function test, I have told you it's very expensive. So sometimes we are not in a position to do that. Now this SGOT, इसका full form क्या है? Serum glutamic oxaloacetic transaminase. This SGOT and your bilirubin, it can go off because when there is a hepatic cell damage, because this enzyme is found in the liver cells. I have told you that it leaks out and it goes into the bloodstream and it goes up. And particularly alkaline phosphatase, generally it will increase if I have a damage in the bile duct, and that goes back to your blood and the alkaline phosphatase goes up. When the alkaline phosphatase goes up, we can say that we have a problem in the bile duct. So bile duct cells are being damaged. When SGOT level goes up, then we can understand my liver cell is being damaged. Then SGPT is another of liver enzyme which is found in our liver cells. When there is a liver cells damage, then this particular enzyme also increase. Now the SGPT and SGOT. SGPT is more specific marker. SGPT only will increase when there is a liver cell damage. Because of any other reason, it cannot increase in our body. When SGPT increases, then I'm sure that I have a liver cell damage. But SGOT, when it increases, I cannot come to a conclusion 100% I have a liver cell damage. आपको ये दिमाग में आएगा क्यों ऐसा बोल रहा है, यही तो बोला जी लीवर सेल डैमेज होने से एसजीओटी लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो अभी एसजीओटी ज्यादा इंक्रीज हो गया, आई कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन दैट आई हैव अ लीवर सेल डैमेज. क्यों हम नहीं बोल पाएंगे? बिकॉज इट हैज बीन फाउंड दैट इफ देयर इज अ कार्डियक सेल डैमेज होने से भी एसजीओटी लेवल इंक्रीज हो जाते हैं. सो हम लोग एसजीओटी को स्पेसिफिक मार्कर का हिसाब से हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग एसजीपीटी को स्पेसिफिक मार्कर का हिसाब से लेते हैं जो हमको बताएंगे कि लीवर सेल डैमेज हो रहा है कि नहीं. एंड जनरली इसका नॉर्मल रेंज 50 यूनिट पर लीटर है. 50 यूनिट पर लीटर का ऊपर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि एसजीपीटी लेवल इंक्रीज हो गया. सो दैट्स व्हाई
हम लोग क्या करते हैं, एसजीओटी एंड एसजीपीटी का रेशियो लेते हैं, रेशियो लेके देखते हैं रेशियो इंक्रीज हो रहा है मींस मेरा हेपेटिक सेल डैमेज हो रहा है। इवन एसजीओटी का जो रेंज है दैट इज आल्सो विद इन द रेंज ऑफ 45 to 50 unit per liter. And in case of alkaline phosphatase, already I have told that if I have a damage in the bile duct, then the alkaline phosphatase increases. And you will find that it should be within the range of 150 unit per liter. And bilirubin, already I have told that if there was an excessive, ज़्यादा destruction हो रहा है hemoglobin का, 120 days का पहले ही इसका destruction हो जा रहा है, that's why the bilirubin level goes up. So this is more or less you have understood that in case of your liver, liver का बारे में एक तो आपका जानकारी मिल गया, liver क्या है, liver का functions क्या है, liver में ज्यादा फैट accumulations होने से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा मेरा लीवर हेल्दी है कि नहीं, ये इसके लिए जो एसजीओटी एसजीपीटी लेवल दैट इज लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए एटलीस्ट ईयरली। अब मुझे पता चल गया जब मेरा लीवर सेल डैमेज हो रहा है, देन हमको क्या चाहिए, मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए। कौन सी सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट हेपाटोप्रोटेक्टिव होगा, हेपाटो रीजेनरेटिव होगा, जो सप्लीमेंट मेरा ऑक्सीडेटिव जो टिश्यू डैमेज हुआ उसको करेक्ट करेंगे, बाइल सिक्रीशन को इम्प्रूव करेंगे, ऐसा कोई सप्लीमेंट हम लेंगे तो मुझे फायदा मिलेगा, नहीं तो हम कुछ भी लेंगे सप्लीमेंट इट विल नॉट बी इफेक्टिव। ये जो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वी कॉल इट फूड पाइप और इसोफेगस, लेकिन ये जो बकल कैविटी है, जो कैविटी है और कैविटी का बाद जो ये फूड पाइप है वहां पर एक कॉमन पैसेज है, वो कॉमन पैसेज को हम लोग बोलते हैं फैरिंक्स। ये जो कॉमन पैसेज है, देखिए ये कॉमन पैसेज ये मेरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका साथ भी है एंड मेरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का साथ भी ये जुड़ा हुआ है। इफ it is related to my digestive system, then we call it oropharynx. If it is related to my respiratory system, then we call it nasopharynx. So this common passage basically opens into your food pipe. Now food pipe where it ends, देखिए एक छोटा सा small sac like structure है, ये small sac like structure जो है वो है stomach। ये stomach एंड में कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का अंदर ओपन हो रहा है। देखिए ये कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मैं एरो साइन से घुमा रहा हूं, ये कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ ये कॉयल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फर्दर इसमें ओपन हुआ, एक लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया। ये लार्ज जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड वी आल्सो कॉल इट कोलोन। एंड ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट ओपन्स इनटू रेक्टम, देन एनल कैनल एंड एनस। बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट है वी कॉल इट डिओडेनम और डुओडेनम, जो मिडिल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलियम। ओके, इवन ऑल्सो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी 4 पार्ट है। जो लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, जो मेरा बॉडी का पैरेलल है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पर एक एस लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन बेसिकली ओपन्स इनटू रेक्टम and then ultimately through anal canal it opens into anus. So this is the structure of your digestive system. ये जो digestive system है, ये digestive system का साथ 3 glands जुड़ा हुआ है। एक gland तो है आपका बक्कल कैविटी का अंदर में जो है salivary gland, और ये जो stomach है, stomach का wall में आपका gastric gland है, and another gland you have seen when I have shown you the liver, there is a leaf-like structure that is your pancreas. Generally, हम लोग का digestion start हो जाते हैं buccal cavity से, लेकिन buccal cavity का अंदर में only carbohydrate can be digested.
बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकल रहा है, आप बोलेंगे ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम है बायोकैटलिस्ट। ये बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। इवन ऑल्सो इट इज यूज फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल्सो इन आवर बॉडी। नाउ हियर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंजाइम जो है वो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करता है। जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, इसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं योर एमाइलोलाइटिक एंजाइम। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। जो प्रोटीन जो फिश खा रहा है हम लोग, फिश, मटन, चिकन, एग, इसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मीन्स protein splitting enzyme or the enzyme which basically helps in digestion of protein. And the last one is that lipolytic enzyme. Lipolytic enzyme क्या है? ये lipolytic enzyme basically fat को break down करता है. So it break down the fat and it converts into fatty acid and glycerol. So एक चीज आपको, जो ये fish, mutton, chicken आप लोग खा रहे हो, ये प्रोटीन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अल्टीमेटली इस आइटम में कन्वर्ट करते हैं। दैट मींस इट कन्वर्ट्स इनटू व्हिच पर्टिकुलर सब्सटेंस। जनरली प्रोटीन ultimately converts into your amino acids. This is the simpler form of protein. ये अमाइनो एसिड हम लोगों का शरीर में जाते हैं। जो प्रोटीन हम लोग खा रहा है, प्रोटीन से जो अमाइनो एसिड हम लोगों को मिल रहा है, वही अल्टीमेटली मेरा शरीर में जा रहा है। जो हम लोग रोटी चावल खा रहा है, उससे ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट दैट इज बेसिकली एब्सॉर्ब इन आवर बॉडी। एंड द फैट जो है, फैट का ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है? दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वो जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, दिस इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ योर फैट। सो जनरली मेरा जो डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, हमने चावल खाया मछली का साथ, लेकिन मेरा बक्कल कैविटी में वो चावल ही डाइजेस्ट होगा, और रोटी जो खाया वो डाइजेस्ट होगा बक्कल कैविटी में। क्यों? सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है वो एमाइलोलाइटिक एंजाइम है। मेरा बक्कल कैविटी में प्रोटियोलाइटिक और लाइपोलाइटिक एंजाइम नहीं है। सो प्रोटीन और फैट का कोई डाइजेशन मेरा बक्कल कैविटी में नहीं होगा। नाउ ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप का अंदर में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अल्टीमेटली द फूड कहाँ पर आ रहा है? स्टमक में। स्टमक में जितना सारे हम लोग प्रोटीन लिए हैं, इसका डाइजेशन ये स्टमक में होगा। So I have taken chicken, fish, mutton, and egg. It will be digested in the stomach, and after that it comes to your small intestine. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे फूड का डाइजेस्ट होगा। वो कार्बोहाइड्रेट हो, वो प्रोटीन हो, वो फैट हो, उसका डाइजेशन अल्टीमेटली कंप्लीट होगा आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन। And small intestine may particularly in the duodenum it will be completed, and all carbohydrate, fat, protein will be converted into fatty acid, glycerol in case of fat, in case of your protein, amino acid, and in case of your carbohydrate, glucose, fructose and galactose. And ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने का बाद ये थ्रू ब्लड सर्कुलेशन आपका सेल व टिश्यू में आएगा। टिश्यू में उसका बर्निंग होगा, बिकॉज वी आर ब्रीथ इन एंड वी टेक ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन थ्रू मेरा ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, वहां से मेरा ब्लड में जा रहा है ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी मेरा सेल टिश्यू में आ रहा है। ये ऑक्सीजन बेसिकली ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। ये हम लोग जो काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ये तो हम लोग को तो एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो खाना खाया वो आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हुआ। कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फैट जो बटर, घी एंड ऑयल हम लोगों ने लिया वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये फैटी एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज है, वो थ्रू ऑक्सीजन इसका
ऑक्सीडेशन होगा, वहां से मुझे एनर्जी मिलेगा। ये एनर्जी जो मुझे चाहिए वो तो यूटिलाइज होगा, जो यूटिलाइज नहीं होगा वो मेरा शरीर में एटीपी का हिसाब से जमा रहेंगे। जब मुझे एक्सेस एनर्जी का जरूरत है, देन एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कन्वर्ट्स इनटू एडीपी एंड इट रिलीज योर एनर्जी। Okay, so that way generally it happens. So another part, we have to understand the peristalsis movement. जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड पार्ट, which basically makes the stool or feces, okay, वो क्या होगा, वो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, वहां से वो रेक्टम एंड एनल कैनल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ये जो मेरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या ये जो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेकिन मेरा gastrointestinal tract contract नहीं हो रहा है, it is in relaxed conditions, then undigested part ultimately from large intestine, it will not come rectum and anal canal, it will not be thrown out from the body. Then undigested part, if it is inside my large intestine, that will create a lot of problems. मेरा constipations होगा, constipations होने से stool hard हो जाएगा, hard होने से if I put more pressure during defecations, मेरा anal region may rupture hoga, that leads to your fissures, sometimes it leads to your piles. So these are the problem may occur. Not only that, there will be a wound formations. If undigested part, if it is in large intestine, if my body is unable to throw out from the large intestine to outside, then it will create toxic effect, and it will also increase the dyspeptic symptoms. More gas hoga mera gastrointestinal tract mein. सो फ्लैटुलेंस होगा, मुझे भूख नहीं लगेगा, खाना खा नहीं पाएंगे, बिकॉज कुछ खाना खाया नहीं, लेकिन मेरा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ये मेरा शरीर से थ्रोन आउट नहीं हुआ, इसीलिए क्या होगा, वो विंड फॉर्मेशंस करेंगे, पेट फुला फुला लगेगा, एपेटाइट नहीं होगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, एंड आई विल नॉट गेट ऑल्सो एनर्जी। So this is the overall things in case of your digestion. We have given in a brief way. Now we will talk about disorder. हम लोग का हमेशा ये हम लोग सुने हैं ये अल्सर, गैस्ट्राइटिस, देन अल्सर भी सुने हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, डियोडेनल अल्सर हुआ, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों मेरा इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा लाइनिंग हो रहा है, क्यों मेरा अल्सर हो रहा है, इसका कारण क्या है? जनरली देखिए, यहाँ पर हमने दो चीजें दिखाई, एक तो अटैकिंग एंड अनदर वन इज डिफेंसिव। व्हिच आर द अटैकिंग फैक्टर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशंस हो रहा है आपका स्टमक में, आपका स्टमक में पेप्सिन भी रिलीज हो रहा है फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब लोग अल्कोहल ले रहे हैं, एनएसाइड्स फॉर मेरा दर्द हो रहा है, दर्द के लिए मुझे डॉक्टर ने एनएसाइड्स लिखे हैं, हम एनएसाइड्स लिया। एनएसाइड्स का मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये नॉन सिलेक्टिव है, ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। कॉक्स 2 को इनहिबिट करने से मेरा दर्द तो कम होगा, कॉक्स 1 इनहिबिट होने से मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अंदर में एक म्यूकोसा लाइनिंग है, वो म्यूकोसा लाइनिंग फॉर्मेशन नहीं होगा, सो मेरा जो गैस्ट्रिक वॉल होगा वो नेकेड होगा, सो नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन से मेरा गैस्ट्रिक वॉल परफोरेशन हो सकते हैं। And another one is bile acid, that is particularly secondary bile acid. If it comes to your stomach or your small intestine, that may damage your mucosal lining. So these are the attacking factor. मेरा पास क्या है? मेरा पास म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, मेरा पास बाइकार्बोनेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, दैट विल हेल्प फॉर्मिंग द coating on the gastric wall, and that will give the protection by gastric wall. So ये defensive factor है।
Now, when there is a balance of this attacking factor and defensive factor, मेरा कुछ नहीं होगा, gastritis भी नहीं होगा, ulcer भी नहीं होगा, nothing will happen. But when there will be an imbalance, मेरा attacking factor ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा हूँ, NSAIDs ज्यादा ले रहा हूँ दर्द के लिए, even also मेरा एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, even your पेप्सिन सिक्रेशन हो रहा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड हम खाना नहीं खा रहा है, मुझे खाना खाना चाहिए बिकॉज प्रोटीन हम लोग नहीं लेंगे तो पेप्सिन जो रिलीज हो रहा है वो खाना प्रोटीन नहीं मिलने से क्या करेंगे, जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको खा जाएंगे, सो मेरा म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो जाएगा. Now, so that's why we would like to keep the balance between your acid pepsin and mucosal defense. So there will be no problem. If it is found that my aggressive factor, attacking factor, it scores over your defensive factor, then there is a chance of your mucosal damage. And that leads to initially, if there is an inflammation. I have used a word inflammation. ये inflammations का मतलब क्या है? Inflammations का मतलब है जो mucosal lining है वो swelling हो गया, उसका pain हो रहा है, redness हुआ, that is called inflammations. So ये होगा because the hydrochloric acid will initially not completely damage the mucosal lining. It will be inflamed, then after that it will damage the mucosal lining, which will leads to ulcer. अल्सर का मतलब एक ही है, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में म्यूकोजल लाइनिंग है उसका डैमेज हो गया, वहां पर वुंड्स और there is a discontinuation of your mucosal lining, and because of that we are suffering. Now इसमें भी आपको दो चीजें है, देखिए ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ये अल्सर नहीं है लेकिन इसका जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो इन्फ्लाम्ड हो गया, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन हो रहा है. दिस कंडीशन इज नोन एज गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस बेसिकली द प्री स्टेज ऑफ योर गैस्ट्रिक अल्सर और अल्सर. जो आदमी का गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, if it is not being treated then ultimately it converts into your gastric ulcer. Now ये जो अल्सर है, ये मेरा अल्सर, ये जो wounds है ये मेरा स्टमक में हुआ है. इफ इट इज इन स्टमक देन मेरा जो अल्सर हुआ है उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर. लेकिन ये wounds मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मींस फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडेनम में हुआ है, देन इट इज अ डियोडेनल अल्सर. सो ये एक आदमी का जब स्टमक में अल्सर हो रहा है हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जिसका डियोडेनम में अल्सर हुआ है हम लोग बोल रहे हैं ये डियोडेनल अल्सर है, जिसका स्टमक एवं एंड डियोडेनम दोनों में आपका अल्सर है देन वी आर कॉलिंग इट पेप्टिक अल्सर. सो पेप्टिक अल्सर का मतलब है पेप्टिक अल्सर इक्वल टू गैस्ट्रिक अल्सर प्लस डियोडेनल अल्सर, दोनों एक साथ मिला के पेप्टिक अल्सर होगा. ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, एंडोस्कोपी करने से पता चलेगा कहां पर अल्सर है. हम बोलेंगे नहीं, एंडोस्कोपी का कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम विलेज में हूं, कहां पर यहाँ पर एंडोस्कोपी होगा? वेरी सिंपल. आपका पास जो पेशेंट आया, आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहिए पेशेंट को. आपको पूछना चाहिए कि आप खाना खाने का बाद आपका पेट में दर्द होता है, ना खाना खाने का बाद 2 घंटा बाद और 1.5 घंटा बाद आपका पेट में दर्द हो रहा है? बोलेंगे सर खाना खाने के बाद तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं, देन ही सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक अल्सर. बट आपको बोला नहीं सर खाना खाने के बाद इमीडिएटली दर्द नहीं हो रहा है, यू विल फाइंड दैट 1 घंटा 2 घंटा बाद मेरा पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं, दैट इज योर डियोडेनल अल्सर. उन्होंने बताया सर खाना खाने के बाद तो पेट में दर्द होता है, ये दर्द चलते रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पेट में दर्द महसूस होता है, देन ही सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर. दैट उसका स्टमक में भी अल्सर है, डियोडेनम में भी अल्सर है, दोनों में ही अल्सर. Okay, so this is a very simplest way I have tried to describe. I don't know that how much you people have understood. I am trying my best to explain in Hindi.
Generally, I don't explain in Hindi, but I'm trying my best to explain in Hindi because I know that if I start speaking English completely, then it will be very difficult for some of the people. And some of the people, they don't have any problem. They understand English and they will be able to understand. Okay. So, You sir, would we like to are say? very, very much thankful. So, you have elaborated this critical thing so nicely in a simple way. So, we have all our will get benefit, sir. But we want to know, sir, our all the leaders and all the NHMPL distributors all wanted to know the two product which we have projected today. That is one is flaxseed and the liver. These two, how it will help this two types of problems. One line is Absolutely. liver and yes, sir. Now I'm going for that. Now I have made a base. At least now they know that if I say that, Now you can minimize the PPT. So you can close the PPT so that we can discuss. We can see you clearly, sir.